Hello friends and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, those who are aspiring to pursue their engineering through IITs need to clear the two most important exams that are JEE Main and JEE Advance. So Edureify is here to help you in preparing for your JEE exams. So this video is going to be very interesting. जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए सो दैट आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते जाएं. So JEE exam is gateway to some of the various prestigious engineering colleges. So इसकी पढ़ाई हम लोग एड्यूरीफाई के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. एज वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो हम एड्यूरीफाई के साथ प्रैक्टिस करेंगे डेली. आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा. सो वी सेलेक्ट आर एग्जाम जेईई एंड आर सब्जेक्ट. जैसे कि जेईई में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. सो वी गो फॉर फिजिक्स एंड देन चूज आर चैप्टर. तो चलिए आज हम लोग करते हैं फ्लैश कार्ड्स के साथ प्रैक्टिस. तो देयर विल बी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. A steel scale is to be prepared such that the millimeter intervals are to be accurate within 6 into 10 raised to minus 5 mm. The maximum temperature variation from the temperature of calibration during the reading of the millimeter marks is this. So what is the possible answers? Let's see. Let's check what's the right answer. Just flip the card. It's 5.0 degree Celsius. Next question. A steel rod 25 centimeter long has a cross-sectional area of 0.8 centimeter. Force that would be required to stretch this rod by the same amount as the expansion produced by heating it through 10 degrees Celsius is this. So let's check the possible answers. Okay, flip the card and see. It's 160 N. Next question. Two rods of different materials having coefficients of thermal expansion and Young's module, respectively, are fixed between two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of the rods. The thermal stresses developed in the two rods are equal, provided y1 raised to y2 is equal to. Let's check the possible answers. Flip the card, it's 3 raised to 2. So this way you can use the flashcard features and practice on daily basis. Now let's go to other section. Now we come to learn and just see how we can make use of learn feature. You can select your exam, JEE, choose the subject you want, chemistry, go for the topic and start your learning. सो जिन्होंने अभी तक एड्यूरीफाई लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो तो प्लीज़ वो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और एड्यूरीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और यूज़ करें. जितना ज़्यादा आप एड्यूरीफाई को अपना डेली रूटीन में यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. आप अपना प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं और अपना एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी जान सकते हैं. आप अपना टाइम चेक कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम डिवोट किया है और एग्जामिनेशंस की इनसाइट भी जान सकते हैं. जेई, सीबीएसई एंड अदर. Once you are done with the particular topic, just click on the next tab and move to other topic. And if you want to make any notes, just click on note and get it saved.